हेलो एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम क्लास 10 NCERT चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ कार्बन। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है उनमें कार्बन होता है, कार्बन से बने होते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट मीगर। बहुत ही कम है कार्बन, किसमें? अर्थ की क्रस्ट में और एटमोसफेयर में। अर्थ की क्रस्ट में 0.02% है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, and in the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. The properties of carbon which make carbon so important to us is that ionic compounds have high melting and boiling points and help to conduct electricity in solution or in the molten state. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करता है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ion. जो भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टर है, उसमें जो आयंस हैं डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, कंपाउंड्स जो हैं. The atomic number of carbon is 6. Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell. In the case of carbon, it has 4 electrons. कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं इन इट्स आउटरमोस्ट सेल में एंड नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन. और नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए 4 का गेन या 4 का लॉस होना जरूरी होता है. It could gain 4 electrons forming C4 anion and it could lose 4 electrons forming C4 cation, C4 plus cation. Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. The shared electrons belong to the outermost shells of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. जो simplest molecule होता है इस form में वो hydrogen है. As you have learnt earlier, the atomic number of hydrogen is 1. Hence, hydrogen has 1 electron in its K shell and it requires 1 more electron to fill the K shell. The shared pair of electrons is said to constitute a single covalent bond between the two hydrogen atoms. A single covalent bond is also represented by a line between the two atoms. The atomic number of chlorine is 17. In case of oxygen, we see the formation of a double bond between two oxygen atoms. This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its L shell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires 2 more electrons to complete its octet. To continue this lecture, subscribe our channel and share this channel to your friends also, and download our app bhadurifoundation.com to get PDF of this lecture. Thank you.